Hey, hi guys, welcome to the Option Jam, and I hope all of you are doing great. So, guys, let's start with commodities first. Like today, we having a sensex expiry. So, right now, I'm just starting with commodities, and then we just see Bitcoin, and after that, we see indices, Indian indices, and then after we also look at like other indices as well, like Dow Jones and Hang Seng as well. And after that, we see some stocks specific. Okay, so first of all, standard disclaimer, guys. I'm not a savvy registered person. Whatever I'm sharing is totally for educational purposes and best of my knowledge. And okay, guys, so let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस क्या देखने को मिल रहा है हमको गोल्ड में जो बाइंग आई थी फ्रॉम द लोअर लेवल्स। ठीक है, अगर मैं गोल्ड की बाइंग की बात करता हूँ, गोल्ड में हमारे जो लेवल है विच इज़ 3900। ठीक है, तो 3900 का सपोर्ट लेके गोल्ड ने एक मूव दिया है विच इज़ ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। ओके, सो मंथली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है आपका वो इतना ईजीली मतलब इतना ईजीली आपको है ना, at least we should expect around and around somewhere around 5 to 10% move from here. Okay, but for that we need to like wait and watch what is going on, or like what are the things are building up from this level. So uh, I just like first of all I just remove this level and I just go on a just a minute, XAUUSD. So like I'm having some sort of levels drawn on this chart, that's why I just move it to another chart. So that's going to be helpful for the today analysis. And just a minute, guys. Okay, so it's so this one. Okay, so I just open the chart, fresh chart. Okay, so on this chart, guys, you see that there is a monthly zone here. Okay, monthly support, monthly demand zone. Okay, so from this level I just mark a line. Okay, if you just see, I just zoom it. Okay, then there is a buying is going on. But if you just see on a lower time frame, on a weekly time frame, so we are having some sort of lower low formation. Okay, so this one is lower low, then lower high. Okay, lower low, lower high, then again lower low, lower high, and then we see a fall. Okay, so what I'm expecting from this level, this is a monthly level, so at least so I'm expecting around and around we see at least 5 to 10% from this level. So for now I'm just bullish little bit for the retracement and a gold. So I'm just expecting like 43,000 4300 and 4500 in a gold for now. Not 4500 exactly, but 4300 is possible first target, and then second target is 4500. But we see after like what are the possible developments are there, so we just waiting for that as well. So if there are any such a major development are going on, so we just thinking about that as well. But for now, guys, this is a trend line which is right now we see on this chart. Okay, I just do this on a line chart. Okay, so this is a particular trend line if you see. Okay, and if I just okay, so this is a trend line. So the rule is that like in some case you see, okay, that there is no like there is no specific trend line cuts a wick or a एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ कैंडल। ओके, अगर कोई भी आपकी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो तो वो आपका कोई भी कैंडल का विक और बॉडी कभी भी कट नहीं होना चाहिए।
देर आर लॉट ऑफ सिनेरियोज लाइक जैसे कि ये वाला हमारा चैनल फॉर्मेशन है, बट ये ट्रेंड लाइन के केस का मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेंड लाइन अगर ये आपकी है, आपने इसका क्या करा है, मिरर करके इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है, बट अगर यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के लिए जाएगा, वो इसको ऐसे डायरेक्टली कट नहीं कर सकता, ठीक है। आई लाइक if you want to learn more about like lines, how you draw a line and channel for the candles, so with regards to the Elliott wave, I just trying to create a specific video for that as well. But for now, I just give you an idea that if you are drawing any trend line, then there is a rule that specifically that no candle or a wick गेट कट बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। ओके, सो अगर कोई भी आपकी ट्रेंड लाइन ऐसी है जो आप ड्रॉ कर रहे हो और वो किसी कैंडल को या विक को अगर कट कर रही है, जैसे कि ये, ठीक है, तो वो आपकी इनवैलिड ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ये वाली आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। सो ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं वो लोअर लो फॉर्मेशंस देख रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी। ओके, एंड इन अ सी you see 1 2 3 4 5, okay, and then there is your A is going on, A is done and B is done and C is going on. Okay, you can see this kind of development in a gold for now. If I just check it, okay, so specifically you see that gold is moving from the level like 30, like what is the low of this? So low is the around 3942, but you if you just see like different broker chart, then there is a low of 3900 as well. So the thing is that this is your A and this is your B. Okay, then if you just see that B is having a W X Y X Z as well, so this is your C is going on, and most probably you see that C is and around, I just give you idea, then there is again just a minute guys. Okay, so possible target of 4400, okay, then 4700, but we are just having a target, first target 4400. Okay, after that if we see any kind of development, then we check on that time specifically, but for now I'm just bullish till 4400 or 4300. Okay, 4300 or 5 like 4350 and 4400, that's what I'm having a target for now. Okay, so this is target exactly. So that's about the gold guys. I'm like on a higher time frame, I'm bearish in a gold until unless like I just want to first see a target of 3000. Okay, and then there is a rest other targets are also there. So that's about the gold, and if we just check it silver as well. So silver is also having a like target till 6800. Okay, $6800. So like still we having us like $500 to $600 still pending in us, like silver as well. But on a higher time frame we having a target of 4800. Okay, so just waiting for that as well, and for long term I'm just initiating buying until like for waiting for a target of 4800. Okay, before that I'm not initiating any kind of buying in a silver and gold as well. So that's about gold and silver guys. We just moving on a Bitcoin. Okay, so Bitcoin में क्या देख रहे हो आप लोग? सो बिटकॉइन में भी अगर आप देखोगे फॉर्मेशंस किस तरीके के हैं, बिटकॉइन इज ऑल्सो बियरिश फॉर मी, बिटकॉइन इज ऑल्सो बियरिश, बट comparatively if we just check it what is going on. So if you just check it, this is your 1 2 3 4 5 and this is completed. You see there is a possibility of a x. Okay, you see there is a possibility of x in a Bitcoin, but from the current level or like what level, like if we broke 75,000. Okay, if we broke a 75,000, then we are going for a long,
for the target of 1,15,000. Okay, until and unless if we are not broken a 7,500, we are a bearish only. Okay, this is for a positional. Okay, if we just check it for the short term target or like swing target, so at least we want to close about 6,500 for the target of 70 uh 4,000. Okay, so like these are the some ranges like what I'm simply just seeing from the naked eyes, and I just told you about that as well. You can also get it an idea once you practice Elliott wave and all those things, supply and demand, you also get it this kind of target. Okay, so what is um gold is bearish, silver is bearish, bitcoin is bearish. I'm saying this thing again and again. Okay, someday there is a buying in a gold. Okay, if you just check it like 2 to 3 days before, you see there's a 100 point rally in a gold. Okay, and again it's fall around 30 $40 or $50 in a day. So that's kind of speculation. Like if you just want to capture some points, okay, either like ups and down, that is going to be um, might be you capture $100 in a gold in that specifically day. Okay, but might be there is also possible that you lose again that 100 point you capture. So the basic intent or like scenario is that you need to be be aware about your trend, like what is going on in that specific. Okay, if you just capture a movement, okay, that is not going to be make any sense if you lose that moment again. Okay, अगर आपने कोई भी गोल्ड में $100 कैप्चर किए, ठीक है, एंड यू इवन इफ यू डोंट हैव अ व्यू, ठीक है, रैंडमली कैप्चर करना इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक डिफ़िकल्ट. ओके, कुछ लोगों के तुक्के लग जाते हैं, वो ट्रेड कर लेते हैं एंड दे ऑल्सो कैप्चर गुड मूव पॉइंट्स, बट वॉट इफ दे ऑल्सो लूज. ओके, सो दे अगेन लूज दैट रैली. इसीलिए एक व्यू होना चाहिए आपका मार्केट में कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम bearish until and unless we see a 50,000 in a Bitcoin. But if we just broke a 75,000, then we need to study at that moment as well. If we just sustain this low, which is this low is around 57,800. Okay, so if we just sustain this low and we are just start making high formation, then at that moment I need to study this uh, chart from again from this bottom. Okay, until and unless if we just broke this low again in upcoming 2 to 3 days or 4 days, then again this rally continues. Okay, so that's about Bitcoin, gold and silver. So we just need to switch and jump quickly on our indices, our market indices. So let's move on to Nifty. First of all, guys, Nifty is moving amazingly, and we capture around I just give you the idea. बेसिकली हमने बॉटम पकड़ा है, ठीक है ना, एंड आई सजेस्ट इन द बॉटम इनिशियली इफ़ यू जस्ट सी वीडियो. सो मैंने ना इनिशियली बताया था कि यहाँ से लेके हमारे समवेयर अराउंड 1300 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है, और मैंने इसी बॉटम पे आपको बोला था कि वी आर हाईली प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू बी मेक अ बॉटम फॉर in the upcoming days, and from this candle we see higher formation, higher high formation. Okay, so the thing is that, and I already told you the logic as well. If you like the logic, guys, please like, share, subscribe this video, and you get it definitely more educational content. This kind of content is going to be help you in a upcoming market, and you guys are going to be able to do your analysis by yourself without any kind of mentorship. So that's going to be your learning with the live market. So for that you need to be share this kind of videos and subscribe and comment below. Okay, so I also get motivated for if you do these kind of things now, then this is also motivates me a lot, and I try to figure out some more time to create some more videos. Okay, so
आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ऐसे वीडियोस को, तो उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगा जिससे आपको रियल टाइम लर्निंग्स, कैसे मार्केट एनालिसिस करते हैं। अभी तो जस्ट क्या होता है कि ड्यू टू द दैट आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो हमेशा टाइम की कमी रहती है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको इतना ज़्यादा मार्केट्स को डीप डाउन करके बताऊं। तो फॉर दैट एक टाइम लगता है किसी भी मार्केट को एनालिसिस करने में। तो उतने एफर्ट्स डालने के लिए मेरे को एक मोटिवेशन लगेगा। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, देन आई ऑल्सो नीड टू लाइक पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स टू गिव यू दैट आइडिया अबाउट मार्केट्स एज वेल। ठीक है, सो नो वरीज गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ऐसे एजुकेशनल वीडियोस में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बनाने के लिए। सो लॉजिक क्या था, ठीक है, हमने एक टाइम साइकिल का लॉजिक लगाया था, एक एलियट वेव का लॉजिक लगाया था, एक लगाया था आपका कि मार्केट्स में सप्लाई डिमांड क्या बोल रहे हैं। दीज आर द थ्री लॉजिक्स विच आई यूजुअली यूज इन द मार्केट्स। ओके, मैं ये बेसिकली यही लॉजिक्स यूज़ करता हूँ मार्केट में कि डिमांड सप्लाई क्या बोल रहा है, एलियट वेव क्या बोल रहा है, एंड हमारा टाइम साइकिल क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सा टाइम साइकिल का जो लाइक 11 डेज़ का साइकिल जो निफ्टी में चल रहा है, वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, वो ही अगर हम सिंपली यूज़ करते हैं, देन देर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग। ओके, सो दैट्स वर्क्स अमेजिंग। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो साइकिल में क्या होता है गाइस, साइकिल में होता है कि आपके फोर गाइस, साइकिल कैसे काम करता है, साइकिल काम करता है अगर वो लोअर लो बना रहा है तो लोअर लो बनाएगा, हायर हाई बना रहा है तो हायर हाई बनाएगा। वंस इट कंप्लीट्स वंस इट कंप्लीट अ साइकिल, देन इट मूव्स। ओके, रिवर्स और मूव्स। तो ऐसे ही होता है बेसिकली, आपको बोलते हैं कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो या तो कंटिन्यू करता है या रिवर्सल करता है। अगर वो कंटिन्यू करता है उसी साइकिल को, ठीक है, मे बी वो हायर डिग्री पे शिफ्ट हो रहा है उस साइकिल को लेके, तो देखो डाइवर्जेंस वहाँ पर होते हैं। और प्लस आपका अगर कोई साइकिल है, ठीक है, अगर वो बीच में ही ड्रॉप हो गया है, मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे कोई छोटा साइकिल था, वो कंप्लीट हुआ एंड वो जस्ट चेंज, लाइक वो वहाँ से आपको लाइक उसने लोअर लो फॉर्मेशन चालू कर दिए। ठीक है, जब एक छोटा साइकिल बड़े साइकिल में शिफ्ट होता है तो उसको क्या करते हैं हम, उसको बोलते हैं कि भाई कंटिन्यूएशन हुआ है, हायर साइकिल में शिफ्ट हो गया। बट एक छोटा साइकिल अगर वो खत्म हो गया, जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक 360 डिग्री का अगर हमारा सर्किल है तो उसमें 4 साइकिल पॉसिबल है। ठीक है, अगर 90 डिग्री के, ठीक है, तो अगर हमारा कोई साइकिल है, ठीक है, अगर उसने जैसे मान के चलो 4 बॉटम लगा दिए या 4 टॉप लगा दिए, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वंस इट गेट कंप्लीट, देन वो उसके लिए आपको डिग्री पता होना चाहिए कौन से डिग्री के साइकिल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो उतना डीप डाउन नहीं जाके सिंपल सी एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए कि एक टॉप लगा, दो टॉप लगा, देन अगेन आपका यहाँ पे तीसरा टॉप लगा। ठीक है, इट्स डन। ठीक है, फिर यहाँ से आपका एक बॉटम लगा, ठीक है, दूसरा बॉटम लगा। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे आपका एक बॉटम लग चुका, दो बॉटम लग चुका है, एंड देन यहाँ पे एक तीसरा बॉटम लगेगा, एंड पॉसिबिलिटी है कि यहीं से आपका कहीं से मार्केट घूम जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टॉप लगा, दूसरा टॉप लगा, तीसरा टॉप लगा, ठीक है, एक बॉटम लगा, दूसरा बॉटम लगा, तीसरा बॉटम लगा, देन दिस इज द कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल। बट गाइस एक चीज़ ये समझो, अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे ठीक है, टॉप तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट हुए यहाँ पे, एंड आपका एक जो है, मैंने आपको हमेशा बताया टाइम साइकिल्स में क्या होता है, +- 1 डे रहता है। ठीक है, आइदर इट फॉर्म्स एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू द हॉलीडेज, ड्यू टू द सम other things, there are +- 1 day is possible in a any time cycle. Okay, so अगर हम with respect to this cycle अगर देखते हैं, तो then there is a upcoming date which is 10th of July, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट डेट। ओके, ये वाली डेट बताएगी कि अगर यहाँ पे हमारा एक टॉप लगता है तो यहाँ के बाद क्या होता है। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको जो बताना चाह रहा था, देखो आपका यहाँ पे क्या हुआ था, ये हुआ था आपका, एक चीज़ बताता हूँ, एक सेकेंड गाइस। अगर आप देखते हो तो ये वाला जोन है ना आपका, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है with regards to the time cycle. I'm just removing it. Okay, with regards to the time cycle ये बहुत अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं सप्लाई डिमांड की, तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड में भी एक रेजिस्टेंस यही आ रहा है, ठीक है, विच इज़ लाइक 24 550 525, दिस इज़ द लेवल, ओके। अगर आप एलियट वेव की बात करें तो वो भी कहीं यहीं पे कहीं दिखा रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, like what I'm saying, there are a lot of things indicating that there is might be possible top formation around 24,500. So like we are just, if we just ड्राइंग दिस एज वेल, सो देखिए आपको यहाँ पर भी एक इंडिकेशन अच्छा खासा मिलेगा कि देखो 25-37 के आसपास यहाँ पे भी एक लो लेवल आ रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि गाइस इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं एक एक मिनट रुकिए गाइस, यहाँ पे कहीं पे एक ध्यान दीजिएगा कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी सी इन दिस लेवल्स। एक सेकेंड, मैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए एक बार ये वाला लेवल भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से क्या दिखा रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 क्रूशियल। आप मेरी अगर मेरा जो व्यू है वो यही है कि आफ्टर वंस मार्केट टच 500, आई एम वेटिंग फॉर द लाइक वंस इट कंप्लीट 10th of July। मैं आज है हमारी 6th of July, ओके। First of all, whatever dates are there, like whatever days are left, like today is a Monday, and we having left like 7 8 9 10, so there are 4 days still pending in a completion of target. So what we having a target, so target is around 530, so we having a 100 point range, okay. So for in after it reaches this level, we see a sharp fall, okay. That's what I'm assuming right now, that's what I am having a view, that we see a sharp fall. That fall nearly came around 24,200. First this gap is going to fill, and possibility is there that this gap is also get filled once, okay. So this is going to be filled your this level as well, but we need a confirmation at least before anything, ओके। सो अभी भी हमने हायर हाई फॉर्मेशन पर क्लोजिंग करी है, देन वी डोंट हैव एनी बियरिश व्यू। बट मैंने आपको एक जो एलियट वेव के साथ, सप्लाई डिमांड के साथ, टाइम साइकिल के साथ जो रिगार्ड्स में जो लेवल है विच इज़ 25 525 530 500, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मोर क्रूशियल, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ऑप्शन चेन भी ओपन करके देखोगे, देर आर लॉट ऑफ बिल्डअप्स आर देयर, ओके। सो गाइज बिल्डअप्स में मैं आपको यही बोलूँगा कि वो जो लेवल है 24,500 वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। इफ़ यू जस्ट सी अ टुडे चार्ट एज वेल, देन वहाँ पे भी आप देखिएगा हायर लेवल से सेलिंग आ रही थी, ठीक है। तो if we are just higher from the previous day, like as now charts are showing strength, but there are might be a scenarios we see lower closing start from, like whenever we see a lower low closing in a index, then we see a bearish momentum get started. So we need to cautious, okay. There is only 100 point left, so don't get that much greedy, okay. If you get a greedy in a market, then there might be a huge losses, okay. You already capture a 1,000+ point rally, so for that you need to be wait, okay. So let's do analysis for sensex as well. This is all a story about the this is a story about the nifty, okay. So let's quickly check sensex as well. So sensex में भी सेम स्टोरी है, देयर इज़ नथिंग चेंज, ओके। सो ऐसा इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ चेंजेस हुए नहीं है। So if we just check it a sensex, then there is a A B C is going on। C में अगर आप देखोगे तो ये आपको माइक्रोस्कोपिक दिखेगा, देन आपका ये 4th कंप्लीटेशन एंड 5th का, ठीक है। once we see lower closing on a higher time frame like daily time frame, then there is a possibility of trend reversal, and
like there is also this level. तो गाइज रेस्पेक्ट करिएगा लेवल्स का, तो लेवल्स आपकी ट्रेडिंग को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल्स से आप अगर नहीं ट्रेड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली यू सी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, ओके। सो फॉर दैट you need to be cautious in a markets. That's what I'm seeing, okay. अगर मैं टारगेट स्पेसिफिकली बात करूं सेंसेक्स में, तो आपका ये ए है, ये बी है, एंड सी इज़ गोइंग ऑन। एंड सी में अगर आप देखते हैं तो सी में आपकी C is almost get completed. I need to just check it what are the possible targets. So if we just check it this as well, so most probably we see a target for around in between this zone, okay. एग्जैक्टली अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपके कितने कैंडल स्पेसिफिकली टाइम साइकिल देख लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। टाइम साइकिल के रिगार्डिंग में देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपके कितने कैंडल्स लगे, 13 एंड विद दैट 11, ओके। सो अगेन आई थिंक वही डेट आएगी साइक्लिक लाइन के हिसाब से, ठीक है। सो अराउंड 10 जुलाई, ठीक है। 10 जुलाई तक का वेट करेंगे। एंड गाइज डेफिनेटली आई एम नॉट सीइंग दैट मच bullishness in a nifty for now, but if we just check it about sensex, okay. so sensex में अगर हम देखते हैं तो इस वाली कैंडल में एक सेलिंग थी, तो यहाँ कहीं पे, ठीक है। लेट्स आई नीड टू बी लाइक स्पेसिफिकली go with the zone, so I need to just check it on a lower time frame guys. सो एग्जैक्टली अभी हमने टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग देख लिया, बट अगर हमारी कलर की एक्सपायरी है सेंसेक्स की, सो वी नीड टू चेक ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम एज वेल व्हाट इज गोइंग ऑन। सो देयर इज नो सच लेवल आर देयर, स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द मोर लोअर लेवल, जस्ट अ मिनट। ओके, सो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है एक अच्छा खासा मार्केट में, तो मार्केट उसको रेस्पेक्ट करेगा ही, ठीक है। ये एक हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस सो फार नहीं है इतना, ठीक है। रेजिस्टेंस तो नहीं है इतना भी यहाँ पे। लेट्स चेक ऑन अ मोर लोअर टाइम फ्रेम गाइस, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है इतना खास, ठीक है। ये भी चेक इट, ठीक है। सो गाइस सेंसेक्स माइट बी यू सी still bullish comparatively nifty, okay. If you just compare to the nifty, then sensex is having a bullishness still, okay. so sensex में आप देख सकते हैं अभी for the targets of 78 like 78,500 आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट, देन आपका सेकंड टारगेट होगा 79,200, ठीक है। सेंसेक्स तो एक डिफरेंट स्टोरी बता रहा है, बट अभी निफ्टी में तो कुछ इतना ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी को भी मैं एग्जैक्टली अभी यही बोलूँगा कि आई एम बियरिश ऑन अ निफ्टी फ्रॉम द लेवल ऑफ 24,500, or like I am saying that I'm not that much bullish. I'm seeing sideways momentum if there in a nifty, but not that much bullish, okay. Let's quickly jump on the small cap, okay. so small cap में भी अगर चेक करते हैं गाइज, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैंने जिन लेवल्स पे बाइंग बोली थी, जिन लेवल पे मार्केट्स थे जिस टाइम पे सारे लोग पैनिक में थे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट देर आर वट एवर पीपल्स आर मेजरली
I know, okay, there are a lot of people in a markets who are so bearish at that moment. So मैंने उस टाइम पे, I don't know, there are a lot of people who are saying that we see again a fall. Okay, I'm also one of them. Okay, I'm not saying that, but before they are still bearish, and I just capture the movement from the bottom. मैंने काफ़ी टाइम पहले ही जब निफ्टी ने स्टार्ट किया था एक अपसाइड, तो वहाँ पे ही बोल दिया था कि देर देर इज अ पॉसिबिलिटी वी सी 24,500. ओके, सो for that guys, for the now, uh, we are having still fall. सो गाइस अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो मेरे को है ना इतना ज़्यादा, मतलब मैं जो कैप्चर करता हूँ वो करता हूँ एक अच्छे खासे पॉइंट्स. तो फॉर नाउ आई एम ऑल्सो not seeing that much bullish momentum possibility in a small cap as well. So small cap is also bearish for me. And if we just check it, uh fin nifty as well, so fin nifty is also not having a that much target pending as well. So this is also 1 2 3 4 going on and 5. Okay, so guys एक चीज़ याद रखिएगा, अभी as per my analysis, I am bearish or sideways in a nifty. I am what I'm saying, that little bit comparatively I'm seeing that sensex is more bullish comparatively nifty. ऐसा होता है, देखो गाइस क्या बोलते हैं, क्या जब सारे ही चल रहे हैं तो सारे ही चल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. देर आर माइट बी पॉसिबिलिटीज दैट स्पेसिफिकली इफ यू जस्ट सी, ओके, that nifty, if nifty like if nifty moves 150 point, then roughly bank nifty and like sensex moves 4 to 500 points. But there are also some days when nifty moves only 200 points, or like if nifty moves 100 points and okay, so that's the thing in a markets what I'm seeing. I'm not that much bullish for now. Okay, so I'm seeing a resistance on a higher time frame. Okay, in a both like nifty and bank nifty. I'm just and if we just check it, Nikki as well, just a minute guys. So for Nikki there is no such uh okay, if we just not able to cross 71,000 in a Nikki, then there is a downside possibility till the target of 62,000 as well. Okay, so that's the view on a Nikki as well. Okay, and if we just talk it about the Hang Seng, okay, Hang Seng falls are huge, so that's why also metal is also struggling. Okay, so metals are struggling due to the Hang Seng. Just a minute guys. Okay, so metals are looking for support, and I think Hang Seng is going to be uh, taken a support from these levels. I need to remove all the drawings as well. So from these levels I see, okay, if you guys want to know a time cycle for each and every indices or a stock specifically, I'm ready with that. So I'm having all the uh, time cycles. So write comment down the time cycles, then I'm like share all the
time cycles, indices time cycles, so you get it a good accuracy. Okay, so let's continue with the Hang Seng. So in a Hang Seng we are seeing a fall and it's taking a support from the current zone. Okay, so if we just mark this zone as well, and we need to check on a lower time frame, is it any specifically demand zone is there or what? Okay, so there is a demand zone from we see a buying going on. Okay, it's taking support from this level, guys. Exactly, if we just mark this as well, so from this level it's going to be taking support, and that's why metal is also getting a strong. तो अभी बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिकली कि कहाँ कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं कल के लिए. रियलिटी तो डेफिनेटली गोइंग गुड एज वेल. ऑटो ऑटो इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट एज वेल. ओके, सो रियलिटी तो गाइस थर्ड वेव में है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है, दिस इज 1 2 3. ठीक है, 3 is going on in reality, and reality struggles a lot as well, and it's completed its double correction and going for like we need to just check it, is it going for a but if we just check it this timing and this timing, so we need to be like more conscious on the law current zone as well. Like right now I'm seeing a little bit uh resistance level, so we need to just check it this is this just let me just check it once, guys. So this is 15, and for now we just put it this as well. Okay, so we completed 15 as well. अभी आप लोग है ना इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गए कुछ कैलकुलेशंस को लेके कि हाउ एग्जैक्टली इट में मैच. ठीक है, तो प्लस माइनस 1 डे चलता है, तो इफ वी जस्ट सी देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल फॉर अराउंड एंड अराउंड दीज लेवल्स एज वेल. ठीक है ना, इतना एग्जैक्टली इतना जल्दी कोई कैप्चर भी नहीं कर पाएगा. ठीक है, बता भी नहीं पाएगा. तो आई एम if we just see a lower closing. Okay, if we see a reality close a lower level then lower from the today. बेसिकली अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में बेरिश होना है या बुलिश होना है, देन वी यू सी एटलीस्ट क्लोजिंग अ प्रीवियस डे लो क्लोजिंग, अ प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग. ओके, सो अभी हमारे पास कितना टाइम है? ठीक है, तो वी हैविंग अ 1 week मोर फॉर रियलिटी. we need to see if it is going to be reverse from this level or need to be like reverse from this level. We need to just check it. It's having a time cycle for next week, so till the time you guys wait it. Okay, and this is all about the indices, guys. And मेरे हिसाब से है ना since like एटलीस्ट 950 तक जाना चाहिए फॉर द मोर लाइक इन द नेक्स्ट वीक टिल लाइक फ्रॉम दिस वीक एज वेल. ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है रियलिटी में भी. ठीक है, जो मैं रियलिटी में थर्ड वे बोल रहा था वो एक्चुअली सी है. दैट इज़ माई बैड. ओके, so guys, this is also formation of wxy or like either a b c. We need to check it that as well, and if it is abc then we need to check the what is going on. So like it's like whatever analysis if you are doing that takes a time. Okay, there is no possibility that in a 30-minute of video I can do all the things. Okay, so for that I try to create a videos on a weekends. So for that you need to be like share this kind of videos and like okay, share, subscribe, guys. So defense is also doing great, and guys, definitely you see more resistance in upcoming days. Okay,
For me, there is like Bandhan Bank is also looking great for me, and there is um like SBI is look good for me as well. So HDFC Bank is also good. Okay, Paytm is also good. So these are the some stocks, and one of them which I'm like bearish is that for like Motilal Oswal Financial Services. That's it for today, guys. I hope you like this video, guys. Definitely share, subscribe with your friend. Okay, press bell icon. Okay, I was just trying to create more and more upcoming educational videos, and if you want these kind of videos, then please comment. And if you want to like more stock analysis, then comment stocks. I can try to create a like shorts or like videos for stock specifically. Okay guys, thank you, good night, bye bye.